Hello, future doctors. Welcome to Dipenism. I am Dr. Dipen Shah, NEET head at Programmatics Institute, Borivali West, and the admissions have already started for the academic year 2026-28. We specialized in medical entrance preparation, JEE mains exam, as well as advanced. So, Programmatics has taken the initiative of a mega revision for the board exams. So without wasting any time, let's bring it on. So firstly, we are going to discuss the chapter reproduction in plants, and we are mainly considering the objective type of questions जिससे हमको board exam में maximum scoring मिल सके. So we are discussing the MCQs and the very short answer questions. So question number 1, that insect pollinated flowers usually possess. तो अगर insect pollination हो रहा है, then there will be sticky pollen grains with rough surface. उनका exine जो होगा, that will be spiny and the pollen grains are going to be sticky in nature so that insect pollination हो सके. ये भी एक one liner question हो सकता है. Insect pollination को क्या बोलते हैं? तो we call it as entomophily. Entomophily. अगर क्वेश्चन विंड पॉलिनेशन पे आता तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड ड्राई पोलन ग्रेन्स विद स्मूथ सरफेस बोथ वुड हैव बीन द ऑप्शन. सो विंड पॉलिनेशन व्हिच इज अनेमोफिली, उसमें ऑप्शन 2 and 3 आता. नेक्स्ट एमसीक्यू, इन ओव्यूल meiosis occurs in. So meiosis occurs in megaspore mother cell MMC, और यही मेगास्पोर मदर सेल meiosis करके 4 फंक्शनल मेगास्पोर्स बना देता है. उसमें से 3 रीजनरेट हो जाते हैं और एक ही फंक्शनल चलाजल मेगास्पोर रहता है. सो ये मेगास्पोरोजेनेसिस के आंसर का पार्ट है. नेक्स्ट एमसीक्यू, द प्लॉइडी लेवल इज नॉट द सेम इन. सो इंटेगुमेंट्स एंड म्यूसिलस दोनों एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स है. रूट टिप एंड शूट टिप आर अगेन डिप्लॉइड एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस इज डिप्लॉइड बट एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड इन एंजियोस्पर्म्स, whereas antiphonals and synergids are haploid. इसके लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3. Next question, which of the following types requires a pollinator but the result is genetically similar to autogamy? मतलब सेम टाइप के जीनोटिपिक कॉन्स्टिट्यूशन किसमें आएगा? तो इट इज इन गिटनोगैमी. गिटनो का मतलब होता है नेबरिंग फ्लावर. सो नेबरिंग फ्लावर में पॉलिनेशन अगर करना भी हो तो विंड तो लेके ही जा सकता है, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह की जरूरत पड़ सकती है, बट वो नेबरिंग फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट है. सिंस द प्लांट इज सेम, दैट इज व्हाई द जीनोटाइप इज गोइंग टू बी सेम. वेयरएज जीनोगैमी जो होता है, दैट इज इन अनदर प्लांट, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ क्रॉस पॉलिनेशन. एपोगैमी, एपोस्पोरी, ये पूरे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है प्लांट किंगडम के रिलेटेड. एंड क्लिस्टोगैमस का मतलब होता है क्लोज्ड फ्लावर, और क्लोज फ्लावर होगा तो डेफिनेटली ऑटोगैमी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इन अ फ्लावरिंग प्लांट इज 12. तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे ही डिप्लॉयड वर्ड दिया है, यू विल से 2n इज इक्वल टू 12. देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 6 क्रोमोसोम. मतलब हमें n जो रहेगा उसके 6 क्रोमोसोम होंगे, तो n वाला स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सा है वो देखना है. तो एंडोस्पर्म तो 3n है. अगर एंडोस्पर्म का पूछते बोर्ड एग्जाम्स में या एंट्रेंस एग्जाम में तो उसमें 18 क्रोमोसोम्स हो जाते. लीफ सेल्स इज 2n, कोटिलेडॉन इज 2n, तो उसमें 12. बट सिनर्जिड्स हो, एंटीपोडल्स हो, एग सेल हो, ये सब हैप्लॉइड है तो उसमें 6 क्रोमोसोम आएंगे. इसके लिए ऑप्शन 4 इज द आंसर. नेक्स्ट एमसीक्यू, इन एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय और due to the fusion of polar nuclei with the male gamete. The polar nuclei are haploid plus haploid, मतलब diploid secondary nucleus and haploid male gamete. इसके लिए ट्रिप्लॉइड पेन का फॉर्मेशन होता है, तो आंसर ऑप्शन 3 है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट द ऑड वन आउट. म्यूसेलस, एम्ब्रियोसैक, माइक्रोपाइल, पोलन ग्रेन, तो ये तीनों स्ट्रक्चर ओव्यूल के है, which is the part of the female plant body, whereas pollen grain is the male gametophyte का structure. So that's why answer option 4 is the odd one. Very short answer questions. Moving to the next objective type of questions, future doctors. Name the part of the gynoecium that determines the compatible nature of pollen grain. Compatibility and incompatibility, pollen grain को accept करना है या reject करना है, उसका decision female part लेगा. So that is the pistil or the carpel that determines the compatibility. और यहीं से acceptance या rejection होगा अगर correct species के pollen grains आएंगे. How many haploid cells are present in a mature embryo sac? तो मेच्योर एम्ब्रियो सैक में देयर आर टोटल 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई. ये भी एक पर्टिकुलर एमसीक्यू होता है, 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई. इसमें से पूछा कितने हैप्लॉइड सेल्स है, तो देयर आर 6 हैप्लॉइड सेल्स. 3 एंटीपोडल सेल्स,
दो सिनर्जिड्स एंड वन एक्सेल, और इनफैक्ट ये सिनर्जिड्स और एक्सेल को हम लोग साथ में बोलते हैं एज द एग apparatus। तो आउट ऑफ 7 cells 6 आर हैप्लॉइड। वो एक सेल कौन सा बन गया, तो इट इज द डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियाई। तो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है विच हैज 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई, वो ओवरऑल सेल इज अ डिप्लॉइड सेल। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, even though each pollen grain has 2 male gametes, why at least 20 pollen grains are required to fertilize 20 ovules in a particular carpel? So अगर 20 ovules है तो it will have 20 ovum या egg cell। so अगर दो मेल गैमेट्स हैं तो हमको 20 pollen grains की क्यों जरूरत पड़ रही है, 10 pollen grains सफिशिएंट होना चाहिए। बट हमको पता है कि एक ही मेल गैमेट फ्यूजन विद द egg cell करेगा, दूसरा मेल गैमेट तो फ्यूजन करता है विद द पोलर न्यूक्लियाई जो एंडोस्पर्म बनाता है। So वही explanation देना है, during double fertilization only one of the male gamete of the pollen grain fuses with the egg cell while the other male gamete fuses with the secondary nucleus। इसके लिए जितने pollen grain और उतने ही ovum होने ही चाहिए। So 20 pollen grains are required। Define megasporogenesis। तो बोर्ड एग्जाम में आंसर आप लोग जिस तरह से लिखेंगे इट इज द प्रोसेस में लिखेंगे, आप लिखेंगे megasporogenesis is the process of formation of haploid megaspore from diploid megaspore mother cell MMC by meiotic division, और इससे लीनियर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। तो ये लीनियर टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेगा। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इज व्हाट इज हाइड्रोफिली। सो पॉलिनेशन विच इज कैरिड आउट बाय वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली। यहाँ पे आप लोग डेफिनेशन में ऐड करेंगे, कोई भी पॉलिनेशन आएगा तो द फिनोमिना of pollination which is carried out by water is called hydrophily. If it is carried out by wind तो anemophily, insect entomophily, bat chiropterophily and birds ornithophily। तो हर टाइप के डेफिनेशन का स्टार्टिंग का स्टेटमेंट सेम रहेगा। When your presentation is good तो आपका बोर्ड एग्जाम में मार्क्स बढ़ जाएगा। Next question is name the layer which supplies nourishment to the developing pollen grains. It is the tapetum. Tapetum is the innermost layer of the anther wall which supplies nourishment to the developing pollen grains. Next definition, what is parthenocarpy? Parthenocarpy is defined as a condition in which fruit is developed without fertilization। Without fertilization अगर fruit develop हो तो parthenocarpy। In fact मैं चाहूंगा कि आप example भी लिखो, example like banana and tomatoes, they are पार्थेनोकार्पिक। और पार्थेनोकार्पी हम इंड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑक्सिन्स, ऑक्सिन्स के एप्लीकेशन से ये हो सकता है। Are pollination and fertilization necessary in apomixis? तो apomixis says when the seed is formed without fertilization। तो बिना fertilization के अगर seed बन रहा है तो there is no necessity of pollination, there is no necessity of fertilization। Directly न्यूसेलस का ही एक सेल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है। So that is polyembryony भी इसको बोला जाता है। These are apomictic seeds। Next objective question, name the part of the pistil मतलब carpel which develops into fruits and seeds। तो हमको पता है ovary develops into a fruit and ovule develops into seed after fertilization। These are the post fertilization events। Next important board exam का question जो हो सकता है, what is the function of filiform apparatus? तो आपको मेंशन करना है filiform apparatus of synergids। synergids में ये होता है they guide the entry of pollen tube towards the egg। और यही इवेंट को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन में भी मेंशन करते हैं कि सिनर्जिड्स बाद में अलाउ करेगा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, सिनर्जिड का साइटोप्लाज्म पोलन ट्यूब एब्जॉर्ब करेगा एंड द पोलन ट्यूब टिप बर्स्ट्स रिलीजिंग द मेल गैमेट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑफ द सिनर्जिड्स। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं ऑफ द प्लांट रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट जो हम चैप्टर ले रहे हैं दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, मेनली ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो फर्स्ट एमसीक्यू, the number of nuclei present in a zygote। so जब zygote का formation होता है it is mainly the 2 nuclei that is the sperm cell and the ovum's nucleus that fuses and eventually तो nucleus fuse होकर single nucleus ही बनेगा। but what they are trying to ask is just recently fertilized egg cell जो होगा जो zygote बनेगा उसमें कितने nuclei होंगे, तो there will be 2 nuclei present। ideally इसका आंसर 1 न्यूक्लियस ही होगा बिकॉज देयर इज सिन कैरी ऑन फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, द मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस दे फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमंस? तो टेस्टिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज द मेल गोनाड। अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टू द वॉल ऑफ द यूट्रस इज नोन एज द इम्प्लांटेशन। ये इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है।
जो अराउंड 7 to 10th डे में कंप्लीट होगा इम्प्लांटेशन ब्लास्टुला का। रप्चरिंग ऑफ फॉलिकल्स एंड डिस्चार्ज ऑफ ओवम इज नोन एज ओव्यूलेशन, जो होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन LH, जिसको हम बोलते हैं LH सर्ज। In human female, the fertilized eggs gets implanted in uterus after about 7 days. अभी कुछ टाइम पहले मैंने 7 to 10 डे पे होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या इसको हम लोग बोल लेते हैं ZIFT, zygote intrafallopian transfer। देन पार्ट्स ऑफ स्पर्म पूछा है, एंड पूछा है कि विच ऑफ द पार्ट रिप्रेजेंट्स द एक्रोसोम। सो A part is the acrosome, B part is the nucleus, C is the centriole, and D is the spirally arranged mitochondria. Presence of beard in boys is a secondary sexual character. So beard, muscles, females may be feminine voice, that is high pitched voice, then development of mammary glands, ये सब secondary sexual characters होगा, जो males में because of testosterone and females में because of estrogen. Next, what is the difference between a fetus and an embryo? So the embryo is a developing organism from fertilization to the end of 8 week. 8 week मतलब second month तक हम लोग उसको embryo बोलते हैं, and then after second month, that is from third month to 9th month onwards, हम लोग उसको fetus बोलते हैं। The fetus is from the third month towards the birth. Outline the path of the sperm up to the urethra. तो sperm का formation होता है seminiferous tubules में। seminiferous tubules से irregular network आता है रेटेटेस्टिस, वहां से 15 to 20 वेसा इफ्रेंशिया, उसके बाद टेस्टिस के बाहर जो डक्ट निकलेगा दैट इज एपिडिडाइमिस, जिसके 3 पार्ट है, कैप्यूट, कॉर्पस कॉर्डा, उधर से वेसा डिफरेंशिया, फिर इजैक्युलेटेड डक्ट व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ seminal vesicles duct and vas deferens, and finally urethra, and urethra से urethral meatus जो फाइनल ओपनिंग होगा वहां से there will be ejaculation. Which glands contribute to the fluid of the semen? That is the seminal vesicles, prostate gland and Cowper's gland या bulbourethral gland. तो 3 accessory sex gland, जिसमें only prostate gland is unpaired, बाकी seminal and Cowper's gland they are paired accessory sex gland. Name the endocrine glands involved in maintaining the sexual characteristics of males. It is the testis or the gonads, that will be the gland. Hormone will be the testosterone, which is secreted by the Leydig cells. Where does the fertilization and implantation occur? Fertilization usually occurs in the ampulla of the fallopian tube, and implantation occurs in the endometrium of the uterus. Uterine and endometrium पे implantation होगा. Enlist the external genital organs in the female. The external genitalia, which is external to the vagina, it includes L, L, M, C, V, H, G. काफी बार breast को भी involve किया जाता है। L से labia majora, labia minora, mons pubis, clitoris, vestibule, hymen, greater vestibular glands, and breasts are also considered as part of external genital organs. सबके बारे में इतना मेंशन करने की जरूरत नहीं, अगर वन सेंटेंस के बारे में जस्ट यू हैव टू लिस्ट डाउन। देन 2 differences between blastula and gastrula, 2 पूछा है, एडिशनल 1-2 लिख के आना। Blastula is formed during the early mitotic division through the process of blastulation. आप लोग लिखेंगे morula transforms into blastula, that process is known as blastulation, and gastrula, when gastrula is formed from blastula, it is known as gastrulation. फिर blastulation में there is no 3 germ layer formation, gastrula में there is formation of 3 germ layers, ecto, meso, endoderm का formation है 3 germ layers. Blastula is formed by rapid mitotic division, क्योंकि वो cleavage के divisions ही चल रहे हैं, whereas gastrula is formed by slower mitotic division. The cells do not move during the formation of blastula, which is true. No movements are happening, whereas morphogenetic movements gastrula में होता है, so that 3 germ layers बने। यहाँ पे germ layers absent, यहाँ पे 3 germ layers. Cells are undifferentiated, यहाँ पे differentiation होता है into ecto, meso and endoderm. तो additional points आप लोगों को mention करने जब objective type question हो। What is the difference between embryo and zygote? Embryo is multicellular, zygote is unicellular. Embryo, it follows the stage of zygote. Zygote के बाद embryo बनेगा, and zygote is the first stage of development after fertilization. Embryogenesis से embryo बनेगा and fertilization से zygote बनेगा. Embryo का formation uterus में होगा and zygote का formation fallopian tube या उधर form होगा ampulla में. Some objective fill in the blanks. The primary sex organ in males is testis. The uterus is called as the mother's womb. Fertilization occurs in the ampulla of the fallopian tube.
the disc-like structure which helps in transfer of substance from the fetus to the mother या mother to fetus is the placenta. Gonorrhea is caused by bacteria called as Neisseria gonorrhoeae. इसको अंडरलाइन करेंगे तो सेपरेटली आप लोग अंडरलाइन करना कि एक जीनस एंड स्पीशीज है. एंड सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रेपोनिमा पैलिडम. तो ये दोनों ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, दोनों के बारे में मेंशन कर लिया. The hormone produced by testis is testosterone. Next chapter is inheritance and variation. First MCQ, phenotypic ratio of incomplete dominance in mirabilis jalapa is 1:2:1. चाहे ये phenotypic ratio हो या genotypic ratio, it is the same in incomplete dominance also and in codominance also. In a dihybrid cross, F2 generation, offspring shows 4 different phenotypes and 9 genotypes. 4 phenotypes हम लोग जो ratio होता है 9:3:3:1, तो types are 4 and genotype ratio हम लोग बोलते हैं 122, 422, 111. तो 9 digits से 9 different genotypes in the dihybrid cross. Monohybrid cross का पूछेंगे तो 2 phenotypes and 3 genotypes. A cross between an individual with an unknown genotype. फ्यूचर डॉक्टर्स मैंने बताया unknown वर्ड आएगा मतलब आपको मार्क करना है. टेस्ट क्रॉस जिसका रेशियो होता है 1:1, 50%, 50%. When phenotypic and genotypic ratios are the same, it is an example of incomplete dominance. या फिर ऑप्शन में co-dominance हो तो आप लोग बोथ मार्क करेंगे. Co-dominance भी. ऑप्शन 2 complete dominance है, वो नहीं मार्क करना है. If centromere is situated near the end, it is called as acrocentric. अगर मिडल में होगा, मिड लाइन पे सेंट्रोमियर है तो इट इज मेटासेंट्रिक. स्लाइटली अवे तो सब मेटासेंट्रिक. नियर एंड है, नियर एंड तो एक्रोसेंट्रिक. एंड एट द एंड है तो टीरोसेंट्रिक. और इसी हिसाब से शेप्स भी पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, एमसीक्यू में. अगर मेटासेंट्रिक है तो वी शेप, सब मेटासेंट्रिक है तो एल शेप, एक्रोसेंट्रिक है तो जे शेप, एंड टीरोसेंट्रिक है तो आई या रॉड शेप. और ये सब जो शेप्स ऑफ द क्रोमोसोम है ये हम स्टडी करते हैं ड्यूरिंग एनाफेज फ्यूचर डॉक्टर्स. तो ये भी एंट्रेंस का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हो गया. क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज सजेस्टेड बाय सटन एंड बावरी इन द ईयर 1902 या 03 है. If the genes are located in a chromosome as PQRST, which of the following gene pairs will have the least probability of getting inherited together? तो together inherit तभी होंगे जब closely linked genes होंगे. बट यहाँ पे पूछा लीस्ट प्रोबेबिलिटी किसका है, तो जो दूर दूर होंगे तो P and T ऑप्शन में होना चाहिए. P and T ऑप्शन में नहीं है तो नेक्स्ट जो दूर की जोड़ी है वो है P and S. अगर हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ इनहेरिटेंस टुगेदर आएगा तो हम लोग P and Q मार्क करेंगे. तो देख लेना क्वेश्चन में यही सेम टेक्सचुअल लैंग्वेज यूज किया कि डिफरेंट कुछ पूछा है. मिसमैच पेयर, डाउन सिंड्रोम इज नॉट 44, इट विल हैव 45 क्योंकि एक्स्ट्रा ऑटोसोम आ जाता है. इट इज ट्राइसोमी 21. टर्नर सिंड्रोम 44 प्लस XO ट्रू है. क्लाइनफेल्डर्स 44 प्लस XXY ट्रू है. एंड सुपर फीमेल या सुपर मेल्स में एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम आते हैं तो 44 प्लस XXX या 4 टाइम्स X इज सुपर फीमेल्स, मेटा फीमेल्स. एंड XYY हो तो सुपर मेल्स बोला जाता है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमन. कलर ब्लाइंड मैन बोला है मतलब आप लोग XY क्रोमोसोम एंड कलर ब्लाइंडनेस के लिए स्मॉल c. मैरिज अ वुमन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन. तो फीमेल इज हैविंग डोमिनेंट एलील X कैपिटल C. द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन बीइंग कलर ब्लाइंड. तो सन को तो फादर से तो Y मिलने वाला है और मदर से अभी कोई भी क्रोमोसोम मिलेगा वो नॉर्मली होगा बिकॉज कैपिटल C डोमिनेंट एलील ही है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सन गेटिंग कलर ब्लाइंड इज 0%. So a very short answer, test cross is a back cross, but back cross is not a test cross. तो यहाँ पे आप लोग एक्सप्लेन करेंगे कि बैक क्रॉस में एक डोमिनेंट बैक क्रॉस होता है और एक रेसेसिव बैक क्रॉस होता है. जो रेसेसिव पेरेंट के साथ हम लोग बैक क्रॉस परफॉर्म करते हैं वो ही टेस्ट क्रॉस कहलाता है. तो यू विल परफॉर्म in short and then you will give that explanation कि dominant back cross is not a test cross but recessive back cross is a test cross. Law of dominance is not universally explanation देना है. So यहाँ पे आपको mainly exceptions के बारे में लिखना है, that is incomplete dominance and co-dominance because they got discovered. That is why we say that law of dominance by Mendel is not universally applicable. Define test cross. The crossing of F1 hybrid with homozygous recessive parent is called as a test cross. Homozygous condition when both the alleles are identical, then the organism is known as homozygous या फिर pure.
या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं इंडिविजुअल हैविंग आइडेंटिकल एलील्स फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड इवन यू विल इवन मेंशन एग्जांपल कैपिटल टी और स्मॉल टी. Heterozygous, an individual possessing dissimilar alleles for a particular trait is called as heterozygous. Example capital T small t. Heterozygous या hybrid. Define dihybrid cross. A cross between two homozygous parents in which the inheritance pattern of two pairs of contrasting characters is considered simultaneous is called as a dihybrid cross. So two pairs of contrasting traits लिए इसको dihybrid. One pair ले तो monohybrid. What are allosomes? The chromosome which are responsible for sex determination are called as allosomes या sex chromosome. Example X and Y mention करेंगे आप. What is crossing over? Crossing over जो process होता है during patchworking, it is the process that produces new recombinations, and this is the process where exchange of genetic material occurs between non-sister chromatids of homologous chromosomes. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में जो एक्सचेंज होता है दैट इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर, जिसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं एंड दैट विल हेल्प इन एवोल्यूशन. गिव एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. इट इज पीकेयू फिनाइलकीटोन्यूरिया या सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड सिकल सेल एनीमिया. दिस आर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स. व्हाट आर X-linked genes? The genes which are present on the non-homologous region of X chromosome are called as X-linked genes. और इसी का inheritance हम लोग पढ़ते हैं of color blindness and hemophilia. What are Hollandric traits? Andro मतलब male. The traits which are controlled by genes present on the Y chromosome only. That is called as Hollandric traits. जो father to son में pass होगा. उसके examples है hypertrichosis of Penna. Name an example of chromosomal disorder caused due to non-disjunction of autosomes. Important है autosome, तो उसमें downs आप mention कर सकते हैं सिर्फ, क्योंकि Klinefelters and Turners they are non-disjunction of sex chromosome, तो वो गलती से ना लिखे. Example of complete sex linkage, तो inheritance hemophilia, red green color blindness या myopia, and Y linked में hypertrichosis of Pinna या ichthyosis etc. Next chapter that we are taking is MBI. First MCQ, Griffith worked on streptococcus and transformation discover किया. The molecular knives या scissors या scalpels are restriction endonuclease. Translation occurs in cytoplasm. Transcription occurs in nucleus. But ये eukaryotes में. Prokaryotes अगर specifically दे तो transcription and translation both occur in cytoplasm. Enzyme required for transcription is DNA dependent RNA polymerase. Transcription is the transfer of genetic information from DNA to mRNA. Which of the following is not part of protein synthesis? Transcription, translation तो होता ही. Replication is not directly involved. It's a separate event. In RNA molecule, which nitrogen base is found in place of thymine? तो thymine के place में होता है uracil. How many codons are needed to specify 3 amino acids? 1 codon, 1 amino acid. So 3 codons, 3 amino acids, जिसको हम लोग बोलते हैं non-ambiguous. Which of the following is not an example of inducible operon? It is the tryptophan operon because it is an example of repressible operon. ये एंट्रेंस के लिए जरूरी है. ट्रिप्टोफैन वीडियो operon पे भी अलग से एक वीडियो है, you can watch. बाकी inducible operon जो हम लोग पढ़ते हैं सिलेबस में, that is lac operon. Place the event in the correct sequence. तो पहला इवेंट है मिथियोनाइन tRNA टू द स्टार्ट कोडॉन. तो जो मिथियोनाइन वाला tRNA है वो स्टार्ट कोडॉन AUG के साथ बाइंड करेगा पहले, तो यहाँ पे ऐसा tRNA आएगा. देन नेक्स्ट इवेंट इज ज्वाइनिंग ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट. तो पहले ये तो पूरा स्मॉलर सब यूनिट पे ऐसा इवेंट होता है, फिर लार्जर सब यूनिट अभी बाइंड होगा. देन नेक्स्ट इज बाइंडिंग ऑफ द सेकंड tRNA. सेकंड tRNA भी यहाँ पे बाइंड करेगा विद द नेक्स्ट कोडॉन. And the last step is going to be binding between 2 amino acids. तो इस पे methionine का प्रेजेंस है, सपोज इस पे ग्लाइसिन का प्रेजेंस है, तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड लास्ट में बनेगा. So this is the sequence which has to be followed in translation process. What is the function of RNA primer during DNA synthesis? RNA primer, it attracts complementary nucleotides. So that is why it provides a starting point for DNA polymerase to initiate synthesizing a new DNA strand. And आप लोग even mention करेंगे it attracts complementary nucleotides. Why genetic code is considered as commaless? Because there is no gap or punctuation. It is continuous. That is why it is called as commaless.
What is the genome? The haploid set of chromosomes, that is the one complete set of an organism, is called as the genome. Which enzyme removes the supercoils from replicating DNA? It is the superhelix relaxing enzyme. Superhelix relaxing enzyme removes the supercoil, जिसको DNA gyrase भी बोला जाता था. Why are Okazaki fragments formed on the lagging strand only? तो मेंशन करेंगे the two strands of DNA are anti-parallel, एक 3 to 5 है, एक 5 to 3 है, and DNA polymerase synthesize a new DNA strand in 5 to 3 direction only. So 3 to 5 पे डायरेक्टली बन जाएगा लीडिंग, इसके लिए टेम्पलेट पे लीडिंग स्ट्रैंड, बट लैगिंग टेम्पलेट जहाँ पे पॉसिबल नहीं है, लैगिंग टेम्पलेट डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज वहां पे होगा. So due to that 5 to 3 polymerizing activity, Okazaki fragments are formed on the lagging strand only. फिर इसको जोड़ता है DNA ligase. Where does replication take place? It occurs in the S phase. When does it occur? And where it occurs? So it is in the nucleus, obviously. So S phase of the interphase पे होगा. Define the term codon and codogen. Codon is on mRNA, codogen is on the DNA. Codon, it is the sequence of 3 consecutive nucleotides which codes for one amino acid, and DNA strand bit is the smallest possible sequence of nucleotides which will also specify one amino acid. तो definition similar है, सिर्फ codon हुआ तो mRNA, codogen हुआ तो DNA, anticodon हुआ तो tRNA which is on the anticodon loop. What is degeneracy of the genetic code? Simple, one amino acid can be coded by many codons. तो बहुत सारे codon हो सकते हैं, तो उसको हम लोग बोल लेते हैं degeneracy. For example, glycine amino acid can be coded by GGG, GGU, GGC, GGA. So this को बोलते हैं degeneracy. Next question वही degeneracy पे repeat हुआ है. Which are the nucleosomal core histones? H2A, H2B, H3 and H4. 2 molecules each जो बनाते हैं octamer, histone का octamer. That is the core histone. और H1 नहीं आएगा core में. H1 is the linker in the linker region. H1 histone. Next chapter is evolution. First MCQ: who proposed the first form of life could have formed from pre-existing non-living organic molecules? So that was proposed by Oparin and Haldane by biochemical evolution theory. Otherwise spontaneous generation का भी theory था, which was given by different scientists. Spontaneous generation के non-living से living organisms बन सकते हैं. Give the sequence of origin of life. तो पहले तो आए inorganic से बने organic से colloidal aggregates जिसको coacervates बना बोला गया, फिर eobions और फिर cell आया. So inorganic जो थे वो mainly थे different compounds like ammonia, then water vapor, and there was formation of free oxygen तो नहीं था, और एक organic में मीथेन बना था. So ये 3 compounds में ये 2 inorganic, फिर organic और सारे monosaccharides, amino acids वगैरह बने, and then उससे colloidal aggregates बने जिसको बोला है coacervates. In Hardy-Weinberg principle, the frequency of homozygous recessive मतलब small t वाले का frequency क्या होगा, तो it will be q square. Homozygous dominant बोलेंगे तो उसका आएगा p square. फिर सिर्फ डोमिनेंट का पूछा, सॉरी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट पूछा तो आएगा 2pq. हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, सिर्फ डोमिनेंट पूछा तो p स्क्वायर प्लस 2pq दोनों लेना है, क्योंकि वो डोमिनेंट में होमोजाइगस डोमिनेंट भी आएंगे एंड हेटेरोजाइगस डोमिनेंट भी आएंगे. सिलेक्ट द एनालॉगस ऑर्गन्स. एनालॉगस ऑर्गन्स जो बाय चांस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को हेल्प करता है स्टडी करने के लिए, जिसमें एग्जांपल है फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड पेंगुइन्स. क्योंकि डॉल्फिन अलग ग्रुप के हैं, दैट इज ऑफ मैमल ग्रुप, and penguin is from aves. So 2 different groups में by chance flippers का same function आ रहा है, but structure is different. बाकी whale and bat mammals के group के हैं, it is homologous. Thorn and tendrils stem से ही बने, structure same है, again homologous. And vertebrate hearts and brain again homologous organs है, क्योंकि structurally same है ये दोनों organ. Archaeopteryx, very important, is a missing link या connecting link, and it's a connecting link between reptiles and aves, reptiles and birds के बीच में है. Identify the wrong statement regarding evolution. Darwin's variation are small and directional, that is true. Mutations are random and non-directional, true. Adaptive radiations lead to divergent evolution, true. Mutations are non-random, mutations are random and they are not directional, they are non-directional. जो ये option number 2 correct है.
Gene frequency in a population remain constant due to random mating. रैंडम मेटिंग की वजह से कांस्टेंट रहता है. अगर नॉन रैंडम हुआ, म्यूटेशन हुआ, ड्रिफ्ट हुआ, माइग्रेशन हुआ, तो फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाता है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल की तरफ से. तो इट इज ड्यू टू रैंडम मेटिंग दैट दे रिमेन कांस्टेंट. Which of the following is characteristic not shown by the ape? It is tail is present. That is not present. Apes में tail नहीं होगा, monkeys में tail है. बाकी chin is absent, prognathous face मतलब jaw is forward, the lower jaw mainly, and forelimbs are longer than the hind limbs in apes. Connecting between ape and men, very important statement. It is Australopithecus. Habilis is handyman. Then Neanderthal men जो उसका क्रिमिनल कैपेसिटी 1400 सीसी था, एंड होमो इरेक्टस के दो पार्ट थे, जावा मैन एंड पेकिंग मैन, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट टू मेक यूज ऑफ फायर. अभी बताया क्रिमिनल कैपेसिटी ऑफ नियंडरथल 1400 सीसी, 1600 क्रो-मैग्नन मैन का था. Define the term gene pool. Gene pool is defined as the total genetic information encoded in the sum total of genes in a Mendelian population. Important word है Mendelian population. तो जितने भी Mendelian population के organisms है, उनका the sum total of all the genes is known as gene pool. और उसमें the number of alleles in a gene pool is called as allele frequency या gene frequency. तो यही next definition, the proportion of an allele in the gene pool to the total number of alleles at a given locus is called as gene frequency. Organic evolution, which is defined as slow, gradual, continuous and irreversible changes through which present day complex forms have evolved from simple pre-existing forms, that is called as organic evolution. So simple से complex forms है, इसको बोलते हैं organic evolution. Define population. All individuals of the same species occupying a specific geographical area, they constitute population. ये important है, geographical area word add करना, that is constituting a population. Example, tiger population of a specific area. Define speciation. The process of formation of new species from pre-existing species is called as speciation. What is adaptive radiation? The process of evolution which results in transformation of original species to many different varieties is called as adaptive radiation. For example, marsupial mammals का है, जिसमें kangaroo, wombat, marsupial mole, marsupial wolf, ये जो भी अलग अलग आते हैं, that is adaptive radiation. If variation occurs in a population by chance and not by natural selection, it is called as genetic drift. By chance हो, random word हो, accidental death हो, तो तभी आपको genetic drift mark करना है. Hardy-Weinberg equilibrium states that at the equilibrium point, both the gene frequency and genotypic frequency remain constant generation after generation. अगर frequency same नहीं रहता है, that means evolution is happening. Homologous HSS, homologous in which structure are similar and origin is similar but perform different functions. आप लोग example भी mention करना, 4 limbs of whale, bat, cheetah, men. Structurally the 4 limbs are same but functions are different. What is vestigial organ? Important question. Vestigial or rudimentary organs are imperfectly developed and non-functional organs. They are degenerate structures that were functional in some primitive animals, primitive ancestors. Example, vermiform appendix. Scientific name of modern man is Homo sapiens. हमारा scientific name is Homo sapiens. What are coacervates? Coacervates are colloidal aggregations of hydrophobic proteins and lipids. So colloidal aggregation and hydrophobic है proteins and lipids के, तो ये important definition होगा. What is the age of reptilia? The period of age of reptilia is Jurassic period और ये Mesozoic era. अगर era पूछा तो it is Mesozoic era में Jurassic period is a golden period, इसीलिए Jurassic Park movie भी आया था. Name the ancestor of human which is described as a man with ape brain. जो connecting link है Australopithecus है, man with ape brain. Next chapter is plant water relation. First MCQ. In soil, the water which is available for absorption by roots is capillary water. जो small colloidal spaces of the soil particles में रहते, that is available. Most widely accepted theory for ascent of sap is transpiration pull theory, या इसको cohesion tension theory भी बोलते हैं. Water movement between cells is due to diffusion pressure deficit, that is DPD.
In guard cells, when sugar is converted into starch, the stomatal pore closes almost completely. क्योंकि यहाँ पे फ्लैसिडिटी आ जाएगी. अगर स्टार्च का ब्रेकडाउन होगा तो फिर स्टोमेटल पोर ओपन्स. Surface tension is due to cohesion of water, attraction between similar molecules, hydrogen bonding की वजह से. Which of the following type of solution has a lower level of solute? Solute कम है तो hypo, solute ज्यादा है तो hyper, solute का concentration same है तो isotonic. During rainy season, wooden doors warp and become difficult to open or close due to imbibition. जहाँ पे there will be imbibant and imbibate. Water absorption takes place through root hair, which is present in the region of maturation, and root hair is unicellular. Due to low atmospheric pressure, the rate of transpiration will increase. Atmospheric pressure, तो CO2 concentration, humidity and atmospheric pressure, उससे rate of transpiration is inversely proportional. तो अगर pressure कम है तो transpiration ज़्यादा होगा. अगर atmospheric pressure बाहर का बहुत ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा. तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हाई ट्रांसपिरेशन. करेक्ट. ऑस्मोसिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, बट दैट प्रॉपर्टी जहां पे मूवमेंट ऑफ वाटर होगा, सॉल्वेंट होगा, बट इट इज ड्यू टू द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन मेनली. इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट. व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? या डिफाइन ऑस्मोसिस. Osmotic pressure defined किया है. The pressure exerted due to osmosis is called as osmotic pressure. Yeah, osmotic pressure is the pressure of the solution which is required to oppose, which is in the opposite direction, which is required to oppose the entry of solvent molecules. तो वो externally हम osmotic pressure measure करते with that experiment, जहाँ पे हम लोग थिसल फनल लेते हैं और उसमें हम लोग एक पिस्टन डालते हैं. So that pressure which is required to oppose the movement of solvent is called as osmotic pressure. Name the condition in which protoplasm of the plant shrinks. The condition is called as plasmolysis. What happens when a greater pressure than atmospheric pressure is applied to a pure water or a solution? So what will happen is, if a pressure greater than atmospheric pressure is applied to a pure water, its water potential increases. Water potential means kinetic energy, and it is equivalent to pumping water from one place to the another. Then such a pressure can build up in a plant system when water enters a plant cell due to diffusion, creating a pressure built up against the cell wall, and it makes the cell turgid. तो turbo pressure बढ़ेगा. So that is called as the water pressure जो build up होता है in the roots. So it is root pressure as well. Which type of solution will bring about deplasmolysis? तो reversal होगा जब hypotonic या dilute solution use किया जाएगा. Which type of plant have negative root pressure? The plants in which transpiration occurs rapidly, mainly during midsummer, shows negative root pressure. मतलब ज्यादा रूट प्रेशर उधर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा. ज्यादा बाद में वाटर का पुल बढ़ते जाएगा क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव प्रेशर है, बिकॉज ट्रांसपिरेशन पुलिंग फोर्स जनरेट करेगा. इन विच कंडीशन ट्रांसपिरेशन पुल विल बी अफेक्टेड? For transpiration to occur, the water column should be unbroken and continuous. It is affected due to temperature fluctuations during day and night, and gas bubbles may enter in the water column, breaking the continuity. Name the shape of the guard cell in Cyperus. ये बहुत important question हो सकता है future doctors. The Cyperus plant has both kidney shape and dumbbell shape guard cell. Normally हम लोग बोलते हैं kidney shape is in dicot, dumbbell shape is in monocot, but Cyperus plant में both the types of guard cells are seen. Why do diurnal changes occur in osmotic potential of guard cells? So as per the concept given by Stewart, diurnal changes occur in the osmotic potential of the guard cells due to the starch sugar interconversion. But according to Levitt, जो theory हम लोग ज़्यादा acceptable मानते, the transport of potassium ions, into the guard cells is the one which is responsible for the change in the osmotic potential during day and night, and उस वजह से endo and exosmosis भी होगा. What is Simplast pathway? When water passes from one cell to another cell, it is called as Simplast pathway, and ये transport होगा through plasmodesmata. It is also called as transmembrane. When water passes through intercellular spaces because of imbibition, it is called as apoplast. But cell to cell जा रहा है तो Simplast pathway. So इस first part of mega revision का part 1 bio का last chapter, plant growth and mineral nutrition.
First MCQ, which hormone can replace vernalization? It is gibberellins. Vernalization is the chilling treatment of the seeds. So that is replaced by gibberellins. The principal pathway of water translocation in angiosperm is xylem. Food transportation is through phloem. और angiosperm में xylem में mainly होते हैं vessels. Abscisic acids control leaf fall and dormancy. Leaf fall is mainly abscission because of senescence हो सकता है, and dormancy, that is inactive seed. Which is employed for artificial ripening of fruits? It is ethylene. It is the only gaseous hormone. What is required for stimulation of flowering in plants? Definite photoperiod. और इसी हिसाब से short day plants, long day plants and day neutral plants होता है. For short day plants, what is the critical period? जब भी इन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं photoperiodism पे, the longer duration is important. तो short day है तो long night, the longer duration of the dark or night period is critical. Which of the following is a day neutral plant? So day neutral plant में tomato and sunflower दोनों आएंगे. So actually day neutral plants ककड़ी, टमाटर, cucumber, tomato, cotton, sunflower सब है. Soybean is not a day neutral plant. तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था which is not a day neutral because soybean is a short day plant. Glycine max उसका scientific name है. एंड लॉन्ग डे प्लांट्स में कैबेज, स्पिनच वगैरह आता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही एरर है. एसेंशियल मैक्रो एलिमेंट्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल. फंक्शन ऑफ जिंक इज बायोसिंथेसिस ऑफ इंडोल 3 एसिटिक एसिड. नेक्रोसिस मींस डेथ ऑफ द टिश्यू. येलोइंग स्पॉट्स को हम बोलते हैं क्लोरोसिस. कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स back to nitrogen is called as denitrification. Organism is Pseudomonas denitrificans. How many molecules of ATP are required to fix one molecule of nitrogen? 16 ATP molecules. ये पूरा रिएक्शन ही है. Phase of growth, phase of cell division या formation, phase of cell enlargement या elongation, phase of maturation या differentiation. उसी के हिसाब से sigmoid growth कब आता है? Lag phase, log phase, steady phase. Full form of IAA is indole 3 acetic acid, which is the natural example of auxins. What is meant by open growth? The form of growth where new cells are constantly being added to the plant by the activity of meristem is called as open growth. Mainly activity of meristem में cambium की activity. Stress hormone is ABA, abscisic acid. Denitrification is a process in which anaerobic bacteria convert soil nitrates back to atmospheric nitrogen. Name the bacteria conversion responsible for conversion of nitrite to nitrate. So ammonia से nitrite बनाता है nitrosomonas and nitrococcus, but nitrite से nitrate बनाते हैं nitrobacter. तो ammonia to nitrite पूछा तो nitrosomonas and nitrococcus. नाइट्रोजन साइकिल का भी एक वीडियो है, जिनको डाउट है प्लीज एक बार रेफरेंस ले लें. What is the role of gibberellins in rosette plants? It helps in elongation of the internodes, which is called as bolting effect in beet, cabbage, etc. Vernalization is the chilling treatment, the low temperature treatment of the germinating seeds to promote early flowering, which was proposed by Klippart. Photoperiodism, the response of plants to the relative length of light and dark period with reference to initiation of flowering is called as photoperiodism. तो कितना light and dark period मिले उसको photoperiodism बोलते हैं. What is GPG, grand period of growth? The total time taken to complete all the phases, that is lag, log and exponent, lag, log and steady phase is called as the GPG. So यहाँ पे हमारा complete होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ मेगा रिविजन, जहां पे हम लोगों ने डिटेल में सभी के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट किए फॉर योर मैक्सिमम स्कोरिंग. इन द नेक्स्ट रिविजन ऑफ पार्ट 2 बायोलॉजी हम लोग अगेन ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे ऑफ पार्ट 2 टॉपिक्स. ओके, दैट्स ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स. थैंक यू.